Okay, wonderful. Welcome everyone to this very exciting session of Launch Your Startup with Microsoft Cloud. We have today with us Mr. Haseeb, who is the co-founder of SepiaSolutions, that is the tier one partner for Microsoft. So in this session, what we're primarily going to do is that we will have Mr. Haseeb give you an introduction to Microsoft Cloud Solution Platform, which is Azure. But the exciting thing about this session today is that you will be getting some hands-on uh, info and demo of the platform itself. So you get a better idea of how to operate the system and get into more detail of that. But I leave that to Haseeb to continue. A bit about the NIC. As you guys know, we are the National Incubation Center here at Islamabad, which is the one of the first and the oldest government-operated and the largest, in fact, incubation centers in Pakistan. There's a public-private partnership. As you might know, we have Ministry of IT and Ignite from the public side, the government side, and then we have the Team Up and Jazz as the private partners. So the National Incubation Center has incubated approximately 300 startups in the 6 years that we have been in operation, with a number of success stories. And in order to support the ecosystem, primarily the startups, National Incubation Center has multiple partnerships where we have different training sessions to facilitate startups to develop the ecosystem. And this is one of those sessions that we have in collaboration with Microsoft, one of many, in fact, that we will have with Microsoft to help you understand the cloud solution that Microsoft has. So without further ado, I'm going to hand it over now to Mr. Haseeb, co-founder of SepiaSolutions and tier one partner of Microsoft, who's going to carry this session forward. Over to you, Haseeb. Thank you, Saran. Assalamu alaikum, everyone. I think should we start, or should we wait for a few minutes so participant can join? Zanera, do we have enough participants to go ahead with the session? Zanera? Yeah, I believe we have participation from that side. I think she's, yeah, so we can start with the presentation. Sure. Okay. Okay, can you see my screen, right? Yes, we can see your screen. Okay. I think we can start formally. Assalamu alaikum, everyone. My name is Haseeb Kodvavi. Like Saran said, we are the tier one Microsoft partner, or the purpose of the presentation or this workshop is to help you understand about Azure and how Azure can be relatable to your startup and how you can launch your idea or your startup through Azure. So the agenda of the whole session is we start with introduction and overview about us, what a SepiaSolution is, or what Azure has to offer and what sort of services Azure has on their platform. इसके साथ जो है there is a mindset कि Microsoft is Azure is all about Microsoft technologies. So I try कि मैं उस blocker को ख़त्म करूँ. Microsoft technologies are, or especially Microsoft Azure, is very much for open source, और वो किस तरह help करता है for open source technologies को. And then we will cover a few things about what sort of ideas you might have ideas around AI, IoT, and web app. So how you can launch it through Azure. Then we will cover DevOps, because being a startup, usually a startup has some sort of code base, और वो code base वो है upload करते हैं through different platform. So DevOps is something which is required by every startup, or how they can implement DevOps practices in their environment to effectively monitor, to effectively manage their code base as well as their application. And then these I'll cover this thing within 20 to 25 minutes, and then we will see some Azure thing in action.
जहाँ पर कुछ चीज़ों की डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा, लाइव इन एक्शन दिखाऊंगा कि how things works on Azure, and then we will do the interactive session for the QA. But during the session, अगर कोई specific सवाल है, वो like specific presentation, I encourage कि आप उधर पूछ लें, but it's better if we will like discuss things during the Q&A session, okay? So moving forward with the introduction, SepiaSolutions के बारे में quickly बता देता हूँ. We are a full service firm. Initially, like we have a partnership with Microsoft, we have a partnership with Google. So we are the like kind of the only partner who like providing services of the two leading cloud service provider. And Microsoft, of as being a Microsoft partner, we are working with Office 365 and Microsoft Azure as well. Okay, so it's not just about Azure. So we do provide services for Microsoft Office 365. And other than that, we have few IPs. CPS is one of our product. Is our own IP. But I'm not talking about this thing today. But we will discuss about things in some other workshops. This is our journey. We started in 2010, and then we become partner, a gold partner in 2017. And then last year we got the recognition from Microsoft, and we won Microsoft Partner of the Year award last year. So this is a like quick overview. So like when we like move to, or when we are planning to move to Azure or any of the cloud, so these are the few things like comes into mind of every organization or every company or even every individual. सबसे पहला blocker जो है, like what will be the cost, क्योंकि जितने भी cloud providers हैं, they are especially tier 1 service providers, they are located, they have a geographical data centers throughout the world, but their cost and their services are a bit expensive. So budgeting cost is something is like a primary factor to decide either we like launch our idea on cloud or not. Second is like scalability and performance, what sort of performance I will get on different clouds. One of the like primary blocker hai and how you can achieve an scalable environment or cloud native environment on different cloud platform. The same with the case with the Azure. और I'll try कि मैं इन सारे blockers को आज कोशिश करूँ कि मैं address करूँ. Or security is one of the like primary concern. Although at the startup, at the initial level or the early stage startup, they don't really care about security, but especially जब आपका startup और आपका idea like expand up expansion mode पर जब जाते हो, so security is one of the things where like which requires more attention, क्योंकि initially आपका ज़्यादा ultimate focus होता है idea को launch करने पर. Then एक और concern रहता है especially Azure के साथ कि I have developed something in open source technologies, or क्योंकि since Azure जो है Microsoft का है, so it supports Microsoft technologies. So I'll try कि मैं उसको address करूँ कि किस तरह Microsoft support करता है open source technologies को, और open source database से लेकर open source languages में सारी जो है Microsoft पर supported है. So we'll cover things one by one. This is the whole skeleton of Azure. When we talk about Azure, so Azure एक like कोई एक service का नाम नहीं है. So it like अगर मैं इसको segmentation में like इसको segment करूँ, different segments में divide करूँ, so first thing is like infrastructure services, like where we get like computing, networking, storage, and security. Second part is like serverless computing, where you need environment where you can put your code base, और वो जो है as per requirement, as per need grow करता जाए वो resources. But और एक है edge services. Although edge services में जो ज़्यादा relevant है हमारे लिए यहाँ पे HoloLens और Azure Arc तो रहता है, बाकी ये तीन जो है usually पाकिस्तान में usually relevance इसलिए यहाँ पे नहीं है. And then the tools like Microsoft की खासियत ये भी है कि जितने भी Microsoft के जो tools हैं वो usually आपस में integrated होते हैं. So all the Microsoft existing technologies are like integrated or connected with Microsoft Azure. So for instance, if you are developing things on VS Code or Visual Studio or any of the IDEs, like directly connected with Azure, even GitHub, if you are hosting your code base on GitHub. So we will cover things one by one. जो बाकी services हैं. But first let me explain what exactly cloud technologies are.
because like the participants, the list of participants I see वो जो है multiple backgrounds से हैं, कुछ like Haseeb, established हैं, कुछ I would like to just point out that Anik Abid has a question. He's raised his hand. So yeah, Anik, would you please type go ahead. your I'm going to allow you to talk. So if you could please share your question. Hi, thank you. Am I audible? Yep. Yes, you are. I'm sorry, can you confirm if you can hear me? Yeah, I can hear you. Yes, Okay, we can great. hear you. Great. So while we were on the last slide of the service portfolio, I just wanted to know whether all those services are available in Pakistan, because we have compliance and data security compliances to meet. So all these services are available for local partners as well, right? Yes. But I like this Azure stack, I specified like Azure stack requires a stack to be there. But although Pakistan has this stack, PTCL has this Azure stack, so you can go for the hybrid one as well. Like आप अपनी कुछ services global cloud पर host करो और कुछ services जो है locally PTCL के Azure stack पर host करो, so that can be doable. And as far as like services are concerned, so it's available. पाकिस्तान की like regional कोई boundaries नहीं है, but when you Great. talk And about like regulations, in terms of regulation where you not wanted to host the data services within Pakistan, so obviously वो Azure के साथ आप एक तरह से वो possible नहीं है, क्योंकि all the data center of which Microsoft maintain is like outside of Pakistan. The nearest one is Dubai. So for okay. instance, अगर आप कोई services fintech में हो, अगर आप fintech idea को launch करने जा रहे हो, तो you might see some regulatory or compliance requirement. You can't host something your customer data outside of Pakistan. So yes, challenges are there with global cloud, but other than that, अगर compliance issue नहीं है, तो you can host anything or everything on Azure. All right. So is there any kind of possibility or, architecture where the entire Azure stack is hosted in Pakistan, or that's not possible and we have to put up Not possible. Not possible. Right. Great. Okay. Thank you so much. Thank you. So let me explain कि like because यहाँ पे जो audience है वो multiple like different backgrounds से है. So few people like understand cloud, but few don't. So let me explain what exactly traditional technologies are. देखिए, अगर आप at the moment अपने idea को या अपनी services को launch करने जाते हो, so you have to you have so many concerns about the hosting, where you can host or where you can put your idea or into like in like उसको live कर सको. So traditionally you need a server, you need hardware, you need networking equipment, security equipments. Okay, so this is a traditional on-prem environment, or even if you go with the local data center, so आपके पास यहाँ तक mostly चीज आपको खुद ही manage करनी होती है. But when you talk about the cloud, truly cloud services, which is like usually actually cloud जब मैं specify करता हूँ, तो cloud is a buzzword as well. Okay, so there are few companies in Pakistan as well, they claim themselves cloud, but वो cloud नहीं है. Okay, वो VDC तो कह सकते हैं, virtual data center तो कह सकते हैं अपने आप को, but they are not cloud. क्योंकि cloud की कुछ prerequisites हैं, which is like geo redundant. One of the like primary factor is like it should be geo redundant. It should be geographically dispersed in different locations. Second one is like scalable. It should have like scalability in mind, जब वो cloud services हो. So there are three concepts on cloud. One is infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So let me explain like very briefly. Infrastructure as a service, for instance, you need a machine. अभी आपके पास जैसा laptop, desktop है आपके पास. So you need to maintain everything within the machine. क्या आप operating system के साथ उसके updates भी apply करते हो, तो this infrastructure as a service is the same kind of thing. आपके पास एक machine मिल जाती है, एक compute या एक virtual machine मिल जाती है. Microsoft manage networking, storage, servers, and virtualization part. Okay, and for instance, you created a machine on Windows or Linux machine आपके पास मिल गई, आपके पास machine आ गई, and then under the machine आप क्या host कर रहे हो, services को कैसे manage कर रहे हो, it's up to you. तो यहाँ वाला जो part है, it's your management. Okay, so operating system से ऊपर जितनी भी चीजें is something you are supposed to manage. When we talk about platform as a service, so
अब फॉर इंस्टेंस मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लेता हूँ, यहाँ पर लाइक सर्विस में यू नीड टू होस्ट MongoDB, ओके, यू नीड MongoDB database और MS SQL database और Oracle database। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप उसके लिए यूजुअली क्या करोगे, अपनी मशीन के अंदर रेडी करने के लिए आप एक मशीन क्रिएट करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, देन यू इंस्टॉल ऑल द प्रीरेक्विजिट्स, लाइब्रेरीज एंड ऑल द स्टफ, एंड देन वो जो डेटाबेस या एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करनी है, देन यू इंस्टॉल योरसेल्फ, ओके। सो इस केस में तो यहाँ पर यही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास मिल गया एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल एवरीथिंग योरसेल्फ। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एवरीथिंग इज लाइक अवेलेबल। For a classic example देता हूँ, you need a MySQL or MongoDB database, okay, so you just need to create an instance। आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, जो भी इंस्टेंस का आपको साइज रिक्वायर्ड है, अंडरनीथ जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, अंडरनीथ उसके जो सिक्योरिटी पैचेस हैं, अंडरनीथ उसके जो अपडेट्स हैं, it will be managed by vendor, या in the case of Azure Microsoft provide platform as a service, infrastructure as a service and software as a service, तीनों मॉडल पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहले की एग्जांपल वर्चुअल मशीन है, बहुत सिंपल सी, आपने एक विंडोज मशीन ले ली एंड देन यू मैनेज योरसेल्फ। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की क्लासिक एग्जांपल दे देता हूँ, डेटाबेस, यू नीड जस्ट अ डेटाबेस, वो एसक्यूएल सर्वर हो सकता है और MySQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है। सो यू जस्ट क्रिएटेड द डेटाबेस इंस्टेंस, उसके अंदर जो डेटा है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द डेटा, और जो उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द उसको अवेलेबल करना है 24/7, 99.9% अवेलेबिलिटी उसको इंश्योर करना है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके। सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस की क्लासिक एग्जांपल है जिस ये जूम की जो एप्लीकेशन है इट्सल्फ, या माइक्रोसॉफ्ट 365 इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस। या लाइक यू डोंट नीड टू मैनेज एवरीथिंग राइट नाउ, जैसे हम ये अभी इस वक्त एक वेबिनार कंडक्ट करवा रहे थे, वी अगर एक ट्रेडिशनली देखें तो वी नीड टू क्रिएट प्रोक्योर सर्वर्स और सर्वर्स के साथ सारे सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ्रेंस रूम सोल्यूशन, बट विद जूम वी डोंट नीड टू लाइक एक्वायर एनीथिंग, ओके, जस्ट लाइक जूम का एक यूटिलिटी इंस्टॉल की, मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी एंड देन वी आर डन, ओके। सो इज अ सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस, एंड इस बैकग्राउंड में हार्डवेयर क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, वो जो है जूम जो है इटसेल्फ खुद मैनेज कर रहा है। या माइक्रोसॉफ्ट 365 के केस में अगर आप एक ईमेल सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट से लेते हो एक्सचेंज ऑनलाइन पर, सो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है एवरीथिंग, स्टोरेज, सिक्योरिटी, पैचेस एंड अपडेट्स। आपको बस एक लाइसेंस मिलता है और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्विसेज स्टार्ट कर देते हो यूज करना। सो आई बिलीव लाइक ये कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट लाइक जब भी हम क्लाउड को डिसीजंस लेते हैं कि क्लाउड में किन सर्विसेज को मुझे एक्वायर करना है या किन सर्विसेज पे मुझे होस्ट करना है, सो दीज 3 फैक्टर डिसाइड कि मुझे किस फॉर्म में जाना चाहिए, ओके। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक architecture of the Microsoft. So Microsoft has everything, like you have the virtual machines, you have the containers, you have platform as a service model or serverless computing, and low code and no code applications. So अगर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करें तो ऑब्वियसली यू हैव मोर कंट्रोल, यू हैव कंप्लीट पावर ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन इंस्टॉल एनीथिंग, ओके। बट इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस एरिया या लो कोड इन्वायरमेंट के ऊपर, सो it is like the focus is productivity, इधर कंट्रोल आपके पास लिमिटेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है पावर एप्स is a low code no code application, like you wanted to create an application on the fly, आप एक सर्वे क्रिएट करना चाहते हो, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, बिजनेस एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, किस तरह फंक्शंस में लिखूंगा, किस तरह वो काम करेगा, ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली with every services there are some pros and cons. So and other than that there are managed databases. Microsoft has like leading databases. Microsoft का अपना जो है SQL server तो मौजूद है ही as an instance, आप managed instance के तौर पर, but you have PostgreSQL, MySQL and Cosmos DB. अच्छा, Cosmos DB Microsoft का अपना implementation of the database of NoSQL database है, like you can compare it with like MongoDB, okay. And then Microsoft की अपनी DevOps services है, and since like if you know like GitHub was previously is an independent company, but Microsoft ने उसे भी purchase कर लिया, so now it's part of Microsoft services. So either you go with the GitHub or Microsoft का अपना DevOps जो which is called VS Code, दोनों के दोनों is comes under DevOps. Then other than that Azure Arc and Azure Stack. अच्छा, Azure Arc और Azure Stack की implementation जो है इसको like quickly बता दूं कि Azure Stack is like
आप माइक्रोसॉफ्ट की डेटा सेंटर सर्विसेज अपने इन्वायरमेंट में खुद होस्ट करते हो, जैसे मैंने पीटीसी के एग्जांपल दिया ना, Azure Arc is for hybrid cloud. For instance, if your workload on GCP पे आपने कुछ workload host किया हुआ है, कुछ workload आपने AWS पर host किया हुआ है, you want to monitor those workloads through Azure, so that's possible through Azure Arc. Okay. Okay, like quick facts बता देता हूँ. Like Microsoft has the largest data center. जितने भी 3 providers हैं, Microsoft, AWS and Google. So Microsoft के पास सबसे ज़्यादा data centers हैं, 60+ data centers हैं. और अगर हम पाकिस्तान को कंसिडर करके बात करें, अगर मैं एक सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ जो जिसका ऑडियंस जो है पाकिस्तान है, अगर ऑडियंस जो है पाकिस्तानी है और उसकी सारी ट्रैफिक पाकिस्तान से जनरेट होनी है, सो आपके लिए आइडियल डेटा सेंटर या नियरेस्ट डेटा सेंटर जो पड़ेगा जिसपे आपको लोएस्ट लेटेंसी मिलेगी वो है दुबई. ओके, एंड सेकंड नियरेस्ट है वो है सिंगापुर. सो आप जो है उनमें से किसी एक को कंसिडर कर सकते हो. और इफ़ यू आर टारगेटिंग ग्लोबल ऑडियंस, फॉर इंस्टेंस आपकी ऑडियंस जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ है या यूरोप की तरफ है और ग्लोबल ऑडियंस है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पर भी होस्ट कर सकते हो अपनी सर्विसेज. और सिक्योरिटी इज लाइक फॉल्ट है माइक्रोसॉफ्ट का इस वक्त. ऑब्वियसली एक परसेप्शन था एक वक्त में कि माइक्रोसॉफ्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्विसेज आर नॉट सिक्योर और लिनक्स इज मोर सिक्योर, बट इज नो मोर द केस. अब माइक्रोसॉफ्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है विदाउट एंटीवायरस लाइक प्रोटेक्शन के बगैर भी अब चलाता हूँ, तो कोई एक मलिशियस एक्टिविटी अब तक तो मैंने नोटिस नहीं की. और ये आप ये ट्रेंड देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट जितना सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिक्योरिटी का, so there are so many products for every kind of like services, like for endpoint security, for cloud security, and then management of on-prem services through Azure. Other than that, for those people who are more concerned about the compliance and security and regulation, so Microsoft has the leading complied with all the leading certifications. Like they have all the certification. So these are the like specific subject area. जिसको अगर किसी को जरूरत होगी तो we will discuss about that some other time. And then Microsoft Azure is like a very intuitive portal. This portal is you can access it through browser, you can access it through PowerShell, you can access it through CLI. Okay, and there are like Microsoft services uske andar maujood hai, and there is a marketplace. Other than that, this is a resource manager where like you host all the resources and you can control all the resources through this RBAC. RBAC is a role-based access control. So you can grant permission to specific resources to specific users. Okay, and underneath there are services, so you can specify access to, let's say आपकी एक टीम है 10 लोगों की, one is managing the whole infrastructure, and और आपका एक डेवलपर है और एक जिसको आपने एक्सेस देना है कोई स्पेसिफिक सर्विस का विद लिमिटेड राइट्स एंड कंट्रोल्स, सो थ्रू लाइक RBAC और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप उसको कंट्रोल इंश्योर कर सकते हैं. Second section or the second part of this presentation is about the Azure for open source. एक जो taboo है कि भाई Microsoft is for Microsoft technologies और Azure is for Microsoft technologies. So let me share some insights or some facts and figures. So जो भी Microsoft के ऊपर Azure के ऊपर इस वक्त hosted resources हैं, so जो statistics है more than 50% are Linux. Okay, all the VM cores or all the resources are more than our 50%. like ये customers की, okay, like customers like you and me जो services host कर रहे हैं, so it's like more than 50% is on Linux. Microsoft के marketplace पर जो images हैं, जो resources available हैं, like 60% are for Linux based environment. क्योंकि Microsoft की अपनी टेक्नोलॉजी से तो Microsoft खुद होस्ट या मार्केट प्लेस पर रख देता है, बट फॉर थर्ड पार्टी या डेवलपर्स जो हैं अपने जो रिसोर्सेज या इमेजेस अपलोड करते हैं, मोर देन 60% आर लिनक्स बेस्ड. These are few numbers. Obviously, इसको चैलेंज अगर किसी ने करना है तो Microsoft को कर सकता है. Like I took this this slide from Microsoft environment or Microsoft presentation. Okay, so support की point of view से कि Microsoft में ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड हैट भी सपोर्टेड है, SUSE लिनक्स है, उबंटू है, CentOS है. सो these are the like leading और other than that marketplace है. marketplace के ऊपर आपको काली लिनक्स से लेके कोई भी लिनक्स का फ्लेवर आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा. ओके, सो इट्स नॉट समथिंग दिस इज ये जो यहाँ पर मेंशन है जो ब्रांड्स, ये जो है मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट या मैनेज बाय रेलेवेंट वेंडर इटसेल्फ ऑन Azure. बट अदर देन दैट बहुत सारे और लिनक्स फ्लेवर्स भी मौजूद हैं.
तो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ तक नहीं है. अदर देन दैट, एज एन मैनेज सर्विसेज, जिसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका, MySQL, MariaDB, Postgre, ये सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है एज एन सर्विस माइक्रोसॉफ्ट पर, एंड यू कैन होस्ट इट एज एन सर्विस. So hopefully अगर यहाँ पे कोई किसी के क्वेश्चन कंसर्न है तो you can ask me about like open source or any specific technology you wanted to verify कि वो available है या नहीं. So let's discuss like how you can launch your idea using your okay, there are like few questions जो obviously किसी के सब like mind में आ सकते हैं. One thing is like existing एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी. फॉर इंस्टेंस अगर आप AWS के ऊपर होस्टेड हो या किसी शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ या किसी शेयर्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट पे होस्टेड हो, सो हाउ इट कैन बी लाइक मूव टू अज्योर, और किस तरह मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली वो जब आप पहले अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी डिजाइन की हुई है, सो वो क्लाउड को माइंड क्लाउड कंसिडर करते हुए नहीं डिजाइन की हुई. सो इज दिस पॉसिबल टू मूव दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू अज्योर, और उसको क्लाउड के जो बेनिफिट्स हैं और जो स्केलेबिलिटी वो अचीव कर सकता हूँ, या दैट्स पॉसिबल. Second one is like you are starting your idea or you are starting writing the code. तो obviously ये concern होगा कि how, what sort of technologies, what sort of languages you should use. So एक idea है cloud native का. I'll cover that in next slide. So how you should go with the cloud native one. क्योंकि traditionally जो application develop हुआ करती थी डॉट नेट पर तो यूजुअली बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, बट एक स्टार्टअप यूजुअली स्टार्ट करता है तो वो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज पिक करता है जो PHP पर, जावा पर, रिएक्ट पर, Node.js पर बनी हुई है. सो हाउ यू कैन मेक दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव. ओके, एंड देन so we'll cover like what exactly cloud native is, like the new architecture, और जब हम when we talk about the cloud architectures, जब हम अपने सिस्टम को या सर्विसेज को डिजाइन करने जाते हो, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करने लगते हो, सो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो करंट ट्रेंड्स हैं, पहले तो कंपैरेटिवली पहले एक वक्त में N tier आर्किटेक्चर या 3 tier आर्किटेक्चर की बातें हुआ करती थी, बट नाउ इट्स लाइक इज द लाइक अब जो आर्किटेक्चर डिजाइन होते हैं तो यूजुअली यू गो विद अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. ओके, ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. माइक्रो सर्विस इज लाइक is very like into cloud. आप माइक्रो सर्विसेज को आप जब होस्ट करने जाते हो तो all the cloud provider has some sort of implementation how you can manage the microservices on cloud. Microsoft has the own implementation, एक containerization का Azure Container Service एक कहलाती है, और second है Azure Kubernetes Service. Kubernetes although Google की technology है, but Microsoft की अपनी implementation है on their cloud, so they call it AKS, Azure Kubernetes Service. And then second one is like API based, like you have like multiple APIs or multiple services are running for different purpose, and you put it on containers, and then you go for the DevOps. Okay, so these are the 4 factors which like help you to go for the cloud native. This is the statistics from Microsoft, like cloud native is a new paradigm of software development. और एक estimate है like जैसे 2 areas है जिस पर obviously अब सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, cloud native technologies and then low code and no code. माइक्रोसॉफ्ट दोनों एरिया में गार्टनर के ऊपर लीडर के तौर पर काउंट किया जाता है. सो माइक्रो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के थ्रू होती है. लो कोड और नो कोड के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है, पावर एप्स प्लेटफॉर्म, विच कंसिस्ट ऑफ लाइक पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड पावर BI. ये तीनों टेक्नोलॉजी, तीनों प्रोडक्ट्स मिलके पावर ऐप प्लेटफॉर्म बनाते हैं. तो लो कोड और नो कोड के लिए वो तीनों प्लेटफॉर्म्स और तीनों प्रोडक्ट्स हैं. And for the microservices, you should consider Microsoft Azure. And why cloud native? Speed of innovation, reliability, and security at scale. What exactly speed of innovation is like? For instance, आप एक e-commerce store की हम example ले लेते हैं कि, or for instance, you have an e-commerce store. और typically जब एक हम development करते थे तो होता ये कि let's say आपने Magento के ऊपर WooCommerce के ऊपर store बना दिया, और then you go for the launch, और लॉन्च के बाद यू रियलाइज कि यार कुछ चेंजेस आ गई हैं, और फॉर इंस्टेंस चेकआउट फॉर्म सही काम नहीं कर रहा. ये एक मैं यूजुअली एग्जांपल देता हूँ कि आपने डिजाइन करते वक्त फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया था एट चेकआउट. ओके, बट यू रियलाइज कि पाकिस्तान में यार ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम से ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है. ओके, आपकी टेलीमेट्री से आपने रियलाइज किया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में यूजर कंफ्यूज होता है, सो यू चेंज इट टू फुल नेम. ओके, अब आपने ये चेंज तो अप्लाई कर दिया, बट टिपिकल तरीका क्या है इसको अपलोड करने का या इसको पब्लिश करने का?
आप जो है पूरी वेबसाइट का यूजुअली कॉपी क्रिएट करते हो एंड देन यू अपलोड इट थ्रू एफटीपी और थ्रू ये गिट के थ्रू पुश करते हो। बट इसी चीज को अगर आप डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के थ्रू और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के थ्रू अगर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ हो, तो होगा ये कि आपका जो चेकआउट या ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ उसी को ही आपने उसी के कोड बेस को पुश करना है थ्रू क्लाउड सर्विसेज, और आपकी वेबसाइट को आपने डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट को बंद नहीं करना पड़ेगा, या आपकी ई कॉमर्स चल रहा होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं चेकआउट अभी मैं लेट से 12 o'clock और मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया आपके आपके स्टोर के ऊपर, और वो जो है उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम शो कर रहा था। अब मैं आपकी वेबसाइट को कंटिन्यू ब्राउज कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू शॉपिंग कर रहा हूँ, बट एट द नेक्स्ट चेकआउट एट 1 o'clock मैंने रियलाइज किया कि वो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम चेंज होके फुल नाइम पर चेंज हो गया, और विदाउट एनी डाउन टाइम, विदाउट एनी सर्विस इंटरप्शन। एज एन कस्टमर मुझे कोई सर्विस इंटरप्शन नहीं मिली, और एज एन डेवलपर या एज एन सर्विस प्रोवाइडर आपने थ्रू माइक्रो सर्विसेज आपने उसको रैपिडली और क्विकली इसको चेंज कर दिया। रिलायबल है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक सर्विस ब्रेक होती है फॉर एनी रीजन, सो वो कंप्लीट सिस्टम को ब्रेक नहीं करती है, तो रिलायबिलिटी का फैक्टर आ जाता है इफ यू गोइंग विद द क्लाउड नेटिव। सिक्योरिटी एट स्केल, फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक इंस्टेंस या एक सर्विस कॉम्प्रोमाइज होती है, सो वो कंप्लीटली सारी सर्विसेज को इम्पैक्ट नहीं करती है। सो वो जो आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी है, ऑपरेशन आपका जो है वो चलता रहता है। एंड देन स्केलेबिलिटी एक फैक्टर है जो यहाँ पे मैं स्केलेबिलिटी भी है कि लेट्स अगर आप एक इफ यू गो विद द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर, एक और क्लासिक एग्जांपल है तो कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो और यूजुअली आपका जो ट्रैफिक रहता है वो बड़ा रूटीन में रहता है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑडियंस रहती है, बट सिंस ये ई सीजन है और शॉपिंग सीजन है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपने देखा कि सडनली स्पाइक्स आए आपके ट्रैफिक के ऊपर। सो जब आपका आर्किटेक्चर मोनोलिथिक या क्लाउड नेटिव होगा तो उसके अंदर स्केलेबिलिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने वो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर फॉलो किया हुआ तो ऑब्वियसली आपको एक बॉटलनेक क्रिएट होंगे कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा ऑडियंस को सर्व ही नहीं कर पा रहे होगे। ओके, दैट्स द रीजन जो भी आइडिया जो आप लार्ज स्केल पर क्रिएट करने जाते हैं तो स्केलेबिलिटी एक प्राइमरी फैक्टर होता है जिसकी बेसिस पर आप अपने आइडिया को डिजाइन, अपने आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हो। ओके, सो मैं क्विकली कुछ चीजों को गो थ्रू करूंगा। दिस इज लाइक कन्वेंशनल आर्किटेक्चर, दिस फॉर लाइक टेक्निकल ऑडियंस, ये जो आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ हुआ है। फॉर इंस्टेंस आपका जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो यू क्रिएटेड द सर्विस फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस, यू क्रिएटेड द सर्विस फॉर द ई कॉमर्स एंड देन स्टॉक फुलफिलमेंट। ओके, एंड अंडरनीथ यू हैव अ मल्टीपल सर्विसेज। ओके, फॉर कस्टमर सर्विस आइडेंटिटी सर्विसेज लाइक कि यूजर नेम और पासवर्ड करके वो ऑथेंटिकेट करके आ रहा है और वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू आ रहा है। इफ यू आर गोइंग विद द फिनटेक, आपका जो आइडिया इज अराउंड फिनटेक, सो ऑब्वियसली आपने एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह के फैक्टर सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को भी इंश्योर करना होगा कि user identity should be ensured. Okay, so you created another service for identity, you created e-commerce service. Under e-commerce you have like product service, search service, payment service. All these services are like different hosted on different instances. Okay, so all in all ये उसका architecture है। और then these are like common scenarios जो you if you're considering cloud native तो किसके लिए ज्यादा relevant है और किस तरह की services के लिए बड़ा relevant लगता है। First thing is like business critical application. If you're creating something like Kareem or food panda kind of application, so obviously this is where like you expect certain spikes and certain traffic in your environment or in your application. So उस तरह की applications के लिए, और business critical applications के अंदर ये fintech applications भी आ सकती हैं where like you're creating a digital banking application, so obviously it comes under mission critical application. Yes, SaaS delivery services like you're creating a grocery store or something like that, this comes under SaaS services. या रियल टाइम टेलीमेट्री कलेक्ट कर रहे हैं आप, रियल टाइम टेलीमेट्री में जो आप कंसिडर कर सकते हैं कि यू आर मॉनिटरिंग द यूजर बिहेवियर, वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितना टाइम स्पेंड करता है, किस तरह उसका यूजर एक्सपीरियंस है, उस यूजर एक्सपीरियंस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। सो
and then geo distributed application. Just like example मैंने दी थी कि if you're creating an application जिसका target audience is not just Pakistanis, और ये पाकिस्तानी audience के लिए नहीं है, for global audience, यूरोप में भी audience है, US में भी audience है, so you need to do, you want to like provide the services to global audience, तो obviously आपका जो architecture वो support करे कि आप उसको geographically different locations पर host कर सको in parallel. So cloud native उसमें relevant रहता है, conventional जो architecture है वो relevant नहीं रहता. ये जो है cloud native, you go with the cloud native architecture of your choice, then आप जो है AI powered, और Azure has like multiple APIs itself जिसको आप utilize करके, like for instance sentiment एक API उसकी जो speech API है, उसकी API जो है map API है, तो you can utilize those APIs and then आप अपनी application के अंदर उसको build कर सकते हो, and then through DevOps you like manage the whole development cycle and your business operation through Microsoft DevOps. Second use case है AI on Azure. Azure has like bot services, cognitive services. These are the like native services available on Azure. Okay, and cognitive services, machine learning services. Machine learning is Microsoft is a specific language or like called ML.NET. जिसके through आप like you create your models within Microsoft environment, or these models are hosted on Azure, और फिर आप उनको train करते हो, and through these services आप अपने user के साथ communicate करते हो. Okay, integrating out of the box connector with API management. API management का एक classic example इस ले लेते हैं. Your idea is around fintech. अब आप जब fintech idea लेकर आ रहे हो तो you have to facilitate two kind of audience. One is like you're the consumer and another one is developers. आप अपने प्लेटफॉर्म को डेवलपर्स फ्रेंडली बनाना चाहते हो, जो आप एक्सपोज करना चाहते हो थ्रू एपीआई, आप कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो. सो माइक्रोसॉफ्ट हैज अ सर्विस कॉल्ड एपीआई मैनेजमेंट गेटवे. सो like where you have different services are running underneath, but API management gateway करता है कि you have like 4 APIs. One is for payment gateway, one is for customer services, and one is for some other services. These services are like अब आप उसको एक्सपोज कर रहे हो तो, या किसी बैंक को आप ले सकते हो. बैंक जो है डेवलपर्स को प्रोवाइड करना चाहता है अपना प्लेटफॉर्म, सो डेवलपर्स कैन कंज्यूम बैंकिंग सर्विसेज, और उन सर्विसेज को वो कंज्यूम करने के साथ वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो उसमें कोई अब्यूज ना हो, वो और फेयर यूजेज पॉलिसी कुछ अप्लाई कर सके. सो दिस आर्किटेक्चर इज एप्लीकेबल और रेलिवेंट टू दैट. And then other than that, if you need just a database, previously I explained कि आपको एक MySQL database required है, okay, या MongoDB पे database required है. So Microsoft has like a fully managed database as a service. You can get it like it's like hybrid, is like always up to date. Again, is highly available. Like 99.99% Microsoft ensure करता है उसकी availability को. So these are like my managed instances. These are like Microsoft open source technologies databases. And this is like Azure. Microsoft has the implementation of Redis cache as well. Azure is just called Azure Redis cache. This Redis cache is for those जहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप उस ट्रैफिक को थ्रू कैश सर्व करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप रियल टाइम पे सर्व करते हो तो आप अपनी ऑडियंस को, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को. सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कैशिंग. So Microsoft has the implementation of Redis through Azure Redis cache. And low code platform है Microsoft का Power Platform. Other than that, एक और आर्किटेक्चर Microsoft का, जो अगर आप एक कन्वेंशन या अगर कोई आप वेब एप्लीकेशन होस्ट करने जा रहे हो, so you need Azure App Services, Azure API Management Gateway, and Cosmos DB. Cosmos DB is actually a Microsoft NoSQL database. So this is a typical architecture of web application. If you are hosting a web application on Azure, so you need these kind of services, Azure App Service, Azure Cosmos DB. और अगर आपका database MySQL पर है, so you might go with the MySQL. इसका हम demonstration भी कर लेंगे ये quickly, क्योंकि छोटा सा architecture है, इसको implement करना भी easy है. So I'll demonstrate कि ये किस तरह implement होता है. DevOps with Azure. Okay, let me quickly go through. Okay, DevOps. What exactly DevOps actually is a job title, as well as is in a practice, is an implementation of the services. So what exactly DevOps is? You deploy the services, you operate, and then you monitor.
You learn, just मैंने example दी थी कि first name last name वाली, तो you monitor and learn, and then you create a plan or a change request, okay, which is called like CI/CD, continuous integration and continuous development. So you develop, build किया, test किया, deploy किया, operate किया, monitor किया, and then you realize कुछ changes, and then you create another build, or you develop that, you apply those changes, and then you go for this cycle again and again. So let me, अच्छा इसका भी मैं क्विकली एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा. मैं दो चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, एक वर्चुअल मशीन implementation of web services on Azure, and third one is DevOps. बहुत quickly कोई दूंगा. So this is like Microsoft Azure DevOps implementation is like you plan Microsoft का जो DevOps environment है वहाँ पे multiple services हैं. So either you go with the GitHub or Microsoft DevOps. So it has like boards where you plan Visual Studio Code or Visual Studio Enterprise version. आप कोई भी use करके अपनी development कर सकते हो, or even you can use any of the IDE. Okay, अगर आप Java वगैरह पे काम करते हो, you need to if you wanted to use any other IDE or PHP Storm वगैरह जो आप अपनी normal PHP वगैरह की applications click करते हो, तो आप भी use कर सकते हो. And then आप जब अपना code अपना host करना चाहते हो, तो it could be on GitHub or it could be on TFS. Then the second is pipeline. Pipeline is used for, there are two concepts of the pipeline. One is like build pipeline and release pipeline. Build pipeline is something like अगर आपने एक कोड बनाया है और you want कि वो जब भी वो कोड जो उस रिपोजिटरी के अंदर टर्मिनेट हो या इंक्लूड किया जाए, तो there should be some parameters जो आप इंश्योर करना चाहते हो कि कोड जो है वो उसका, जैसा कि मैं डॉट नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो डॉट नेट के कोड को कंपाइल किया जाता है. तो वो जब बिल्ड आपने एक पाइपलाइन बनाई, तो whenever like any developer or any resource वो उसको अपने कोड को सबमिट करने जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इंश्योर करेगा कि वो बिल्ड हो रहा है. अगर वो बिल्ड होगा तो वो उसकी जो उसने कोड लिखा है उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उस कोड को वो होल्ड कर लेगा. ओके, इसी तरह रिलीज पाइपलाइन होती है. यूजुअली आप करते ये हो कि आप अपना कोड डेवलप करते हो, उसको टेस्ट करते हो और उसको पब्लिश करते हो अपने सर्वर्स के ऊपर. So up for that purpose you create a release pipeline. So whenever the code is developed or then it is being tested, so आप एक release pipeline से एक button press करोगे और वो automatically, you don't need to like rely on FTP services or conventionally जो पहले आप upload करते हो या previously जो एक method हुआ करता था website या application services को manage करने का, वो FTP हुआ करता था. So you go for the release pipeline और release pipeline के through अपने code को publish करते हो, and then you monitor through Azure monitoring services. So let's go for the demo. और इधर कहीं किसी को सवाल है, so और कोई question or concern? Okay, so let me go to demo. और अगर किसी को अभी कोई सवाल है related to these slides or this information, so I can. Hey guys, if you have any questions, you can post them in the Q&A session. The Q&A section, which is right at the bottom of your screen. Where it says Q&A, and we can read out your questions from there. We can answer them. So Haseeb, let's give it a minute. हम देख लेते हैं कि अगर कोई questions post होते But हैं. we have a dedicated we have like specific time for Q&A, so we will cover that part. Okay, awesome. Okay. अगर आपके during the session participants अगर कोई questions आते हैं तो यहाँ पे आप Q&A में post कर दीजिएगा. And then we will address them towards the end of the session in the Q&A section. Okay. So Haseeb, over to you. आप continue कर लीजिए, please. Thank you. Okay. Okay. This is the Azure portal. Microsoft की खासियत ये भी कि Microsoft का जो environment है बड़ा user friendly होता है, और UI UX जो है Microsoft का बड़ा user friendly है. Conventional जो example है, जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करने जाते हो तो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए भी कोई साइंस रिक्वायर्ड नहीं है. इट्स लाइक विजार्ड बेस्ड, लाइक नेक्स्ट 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 इट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस और देन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इवन रेडी होती है. कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो विंडोज के ऊपर, इट यूजुअली लाइक विजार्ड बेस्ड सिस्टम. सो same is the case, like same is the principle with the Microsoft Azure. So this is like a whole this is a Microsoft portal. Here like you see all the services. These are the services panel. Okay, if I click all services, it's going to provide the list of all services. Microsoft has like 100 plus services on their platform for different purposes. Here I can see
I can switch over to different directories. For instance, right now I'm on directory SepiaSolution. So if you're working with multiple customers or multiple clients, so यहाँ पर आपके पास multiple directories आ जाती हैं, and you can switch from one directory to another directory. Okay. और अच्छा Microsoft Azure का जो concept है is like there are the जब भी आप service implement करने जाओगे तो you need a subscription. Subscription is something the basic component to start with Azure. Microsoft is offering मॉडल जो है सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए देयर आर लाइक टू मॉडल्स प्राइमरली तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाओ अपने क्रेडिट कार्ड से साइन अप करो एंड योर सर्विसेज आर और योर सब्सक्रिप्शन विल बी एक्टिव इन अ मिनट ओके सेकंड जो ऑप्शन है वो आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी पार्टनर के साथ एंगेज हो जाते हो जस्ट लाइक अस जस्ट लाइक सीपीएस सॉल्यूशन ओके और एनी ऑफ द पार्टनर आप पार्टनर से एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करवाते हो जब पार्टनर के मॉडल पर जाते हो तो यूजुअली आपके पास जो पेमेंट मॉडल होता है या मेथड जो होता है वो रुपीज में होता है आपको पार्टनर जो बिल करता है वो रुपीज में बिल करता है और जब आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट परचेज करते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड तो आपका बिल जो है वो डॉलर्स के अंदर आपको थ्रू क्रेडिट कार्ड पे करना होता है ओके सो you should have one of the subscription active so I have multiple subscriptions so let's see like जब मैं subscription पे click करूंगा तो I have multiple subscription so यहाँ पे मुझे subscription की list दे देगा okay so first thing first मैं सबसे पहले जो है ना एक जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करके हम देख लेते हैं okay I go to virtual machine this is like infrastructure as a service model or easiest to implement and more control जो मैंने explain किया था previously so let me create a virtual machine it takes like minute or two depend on the size of the machine so before starting for to create any subscription or any virtual machine or any resource you need to specify the subscription okay let me create a 4 demo subscription okay सो कॉन्सेप्चुअली आप करते ये हो कि पहले जो एक सब्सक्रिप्शन आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है एंड देन यू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप्स ओके यू मेक लाइक होस्ट इट ऑन अ एक्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप बट लेट मी क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट लाइक अ लॉजिकल फोल्डर ओके you put all the resources under one bucket so let me अच्छा इसकी नेमिंग कन्वेंशन है सब टू यू बट बेस्ट प्रैक्टिसेस है अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है आरजी डैश भी रख सकता है बट यूजुअली आई गो फॉर कैमल नोटेशन सो आरजी रिसोर्स ग्रुप एनएससी सेशन ओके तो मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन का मैं नाम देता हूँ एनएससी डेमो ओके region I have like as I stated like 60 plus Microsoft के data centers है तो आपके पास different regions हैं अब मैं create करना चाहता हूँ यूरोप यूएस जर्मनी बट सिंस मैंने कहा कि पाकिस्तान और मेरी अच्छा ये वर्जन मेरी जो है सर्विस कंज्यूम करनी है मुझे पाकिस्तान के अंदर और इसकी ऑडियंस भी पाकिस्तानी होगी सो मेरे लिए बेहतर है कि मैं आई शुड गो विद द यूएई नॉट आई कैन स्पेसिफाई द रीजन सो आई एम सेलेक्टिंग यूएई नॉट एट द मोमेंट तो यूएई नॉट अवेलेबिलिटी ऑप्शंस इसको भी स्क्रैप कर रहा हूँ मैं ओके इमेज अच्छा माइक्रोसॉफ्ट की जो है प्रीसेट इमेजेस अवेलेबल हैं यू कैन क्रिएट योर ऑन इमेज और आप यहाँ पे इसको अपलोड करके उसके थ्रू भी अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो बट राइट नाउ ओके और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सी ऑल इमेजेस तो मुझे वो मार्केट प्लेस ओपन कर देगा मार्केट प्लेस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड इमेजेस भी अवेलेबल हैं एंड थर्ड पार्टी इमेजेस भी अवेलेबल हैं सो अभी के लिए आई शुड गो विद द प्री लाइक available machine for instance Windows data centers okay 2019 or even Windows 10 machine okay 10 11 so Windows data center 2019 okay and then you have to specify the size why it's not selecting what's wrong okay अच्छा after like specifying the image yeah operating system
I have to choose the size. See all sizes. अच्छा देखिए Microsoft में जब like you go with the virtual machine, तो virtual machine में different series and sizes हैं. For instance, B series is for UAT purpose, for demonstration purpose. D and E series is for production purpose, okay? And version 3 और version 4 जो है ये आर्किटेक्चर का फर्क है, मीन्स उसके अंडरनीथ जो प्रोसेसर है, जो अंडरनीथ जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है. सो फॉर इंस्टेंस अभी मुझे जो डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनानी है तो मैं बी सीरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ. बट बी सीरीज में भी मेरे पास चॉइसेस हैं कि मुझे कितनी रैम और कितनी प्रोसेस की नीड है एट द मोमेंट, विच कैन बी चेंज एट द लेटर स्टेज. ओके, इसलिए ये कोई एक दफ़ा बना ले तो फिक्स नहीं है. सो फॉर इंस्टेंस मैं ये B4 ले लेता हूँ कि मुझे 4 कोर और 16 GB रैम की ज़रूरत है, और बी सीरीज बिकॉज एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए, तो दैट्स आई एम चूजिंग बी सीरीज. यूजर नेम के 456. अच्छा, मेरी एक बुरी आदत है, मैं यूजुअली यहाँ पर नोटपैड पे काम कर लेता हूँ, और किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो. ओके, और जब आप मशीन की बेसिक पैरामीटर आपने स्टैब्लिश कर दिए, ऑब्वियसली आपको एक इनबाउंड पोर्ट तो रिक्वायर्ड है. जब आप विंडोज मशीन क्रिएट करते तो RDP समथिंग जो जिसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे मशीन को, और लिनक्स मशीन होती तो मुझे SSH की जरूरत होती, बट आई एम लिविंग दैट एज इज. अच्छा, ये पोर्ट 8043 और इसके अलावा भी आप सारी पोर्ट्स को ओपन कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो लेटर स्टेज पे भी की जा सकती है. सो नेक्स्ट स्टेज पर मैं स्पेसिफाई करूंगा डिस्क साइज. माइक्रोसॉफ्ट के 3 डिस्क साइजेस हैं, 4 हैं वैसे. स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD और premium SSD. If you are going with the premium SSD, you will get like 99.9% of time, ensure करेगा वो 99.9% of time. Okay. Then अगर मुझे सिर्फ एक डिस्क की जरूरत है, एक डिस्क, अगर मुझे एडिशनल डिस्क लगानी तो मैं एडिशनल डिस्क भी क्रिएट कर सकता हूँ या अटैच कर सकता हूँ, जो कि लेटर स्टेज पे भी की जा सकती है. So I'm moving forward with the default one. अच्छा, यहाँ पर you can specify जिस जो networking जिनकी understanding है is related to networking, so you specify the IPs, you specify the port which should be open, or which can be changed at later stage. Management, okay. Rest of the things like it should be बाकी सारी चीजों को भी मुझे change करने की जरूरत नहीं है. So it gives me like the brief or the summary of whatever like I specified previously. Like विंडोज सर्वर मशीन क्रिएट होने जा रही है, B4 साइज है उसका, 4 कोर 16 GB रैम, ओके, विद प्रीमियम SSD डिस्क. ओके, अच्छा, डिस्क का जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 128 GB होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के अवेलेबल जो इमेजेस अवेलेबल है, और छोटे इमेजेस भी अवेलेबल है 64 GB, तो आई कैन चूज द फ्रॉम द मार्केट प्लेस. सो राइट नाउ जो डिफॉल्ट वन जो क्रिएट होने जा रही है, इट इज गोना बी विद 128 GB स्टोरेज. क्रिएट, it takes like minute or two, और वो एक मशीन क्रिएट हो जाएगी. Now the task has been initialized. ओके, यहाँ पर ये मुझे जो है ना अपनी जो डिप्लॉयमेंट की प्रोग्रेस शो करता जाएगा, और जो जैसे जैसे वो रिसोर्सेज क्रिएट करता जाएगा उसकी मुझे अपडेट देगा, और आई कैन मूव टू अनदर स्क्रीन. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी स्क्रीन पर रहूँ. बैक एंड पे ये डिप्लॉयमेंट चल रही है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा. बट राइट नाउ अभी मैं इसी स्क्रीन पर रहता हूँ, सो यू गाइस कैन सी. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया, पब्लिक IP एड्रेस असाइन हो गया, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया, नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो गया, और या हो रहा है एट द मोमेंट. एंड देन नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज यूज फॉर लाइक आप स्पेसिफाई करते हो किन IPs को या किन पोर्ट्स पर आपका एक्सेस अलाउ है टू वर्चुअल मशीन. पब्लिक IP एड्रेस आप फिक्स भी ले सकते हो या डायनामिक. डायनामिक की कोई कॉस्ट नहीं है. अगर आप एक फिक्स IP लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी मशीन को एक फिक्स IP मिल जाए ताकि आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सको, सो इट गोना कॉस्ट यू लाइक $3 or $4 है.
Okay, now the machine is ready. Go to resource. Okay, since I created the machine, so अच्छा ये machine जैसे create हो जाएगी तो यहाँ पर अच्छा मैं like I forgot to choose the location. अभी right now वो central US में create हो गया, but क्योंकि मैंने visit वापस से start किया था तो I supposed to choose the UAE not. अब मुझे अगर region change करना है तो I have to destroy the machine and then recreate. One of the option or second is I have to move from one region to another. Okay. अच्छा इसको जो IP allocate हुई है वो I can see it from here. ये मेरी IP है machine की. I can copy and then मैं अपना remote desktop open करता हूँ, IP specify करता हूँ, connect, more choices. Haseeb, anything you need? No. Okay, so we are done with the presentation. Are we on to the demo next? Like, can't you see my screen? Like, I shared the screen. हाँ जी, आपकी screen share हो रही है, but it's blank right now. It's black. I see your desktop. Why is that? Like, I've gone through the whole steps. नहीं वो show हो रही है, बीच में एक दफा blank हो गई थी, but अब अच्छा नजर आ रही है. आपका हाँ server manager. हाँ फिर सही है. वो तो मैंने machine को connect किया. Okay, I just landed to the another machine. I just created the machine. Okay, so this is the new machine I just created. Okay, now ये जो है मशीन मेरी अवेलेबल हो गई है. परफॉर्मेंस आई कैन चेक. ये 4 कोर और 16 GB के साथ अवेलेबल हो गई है. सो नाउ मशीन इज रेडी. अब मुझे इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. सो दिस इज समथिंग आई नीड टू मैनेज इट माई सेल्फ. अब ये जो है मशीन मेरी अपनी है, सो टोटल कंट्रोल मेरा अपना है इसके ऊपर. सो यू जस्ट इट टुक्स लाइक हार्डली 2 or 3 मिनट्स ये मशीन क्रिएट होने में. बट अगर आपकी मशीन का साइज, जैसे अभी तो मेरा 4 कोर का मशीन था, अगर लाइक इफ आई नीड अ मशीन ऑफ लाइक 16 कोर और 32 कोर और मे बी 64 कोर, सो इट माइट टेक्स लॉन्गर देन दैट, लाइक मे बी 10-20 मिनट. ओके, डिपेंड करता है आप किस तरह के रिसोर्सेज को एक्वायर करने जा रहे हैं. सो अगर कोई यहाँ पे कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन किसी का. Okay, now back to my screen. So this is my virtual machine. यहाँ से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को. इस वर्चुअल मशीन का ये एनवायरनमेंट, ये वर्चुअल मशीन का डेस्कटॉप है और ये मेरा अपना डेस्कटॉप है. ओके, सो गोइंग बैक टू अज़ूर पोर्टल. सो अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे जब मशीन अपनी क्रिएट कर लूँगा, सो आई कैन मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन. सिंस आई जस्ट क्रिएटेड इट नाउ, तो मुझे अभी तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, बट आई कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, क्या नेटवर्किंग, कितना डेटा इन और डेटा आउट हो रहा है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैं गेज कर सकता हूँ और आई कैन, अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस के ब्लॉकर नज़र आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मेरे कस्टमर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनको सर्विसेज डिले से मिल रही है, स्लो मिल रही है, तो आई हैव टू सी के मॉनिटरिंग क्या मुझे बताता है. और मॉनिटरिंग में मे बी जो प्रोसेसर है वो 100% पर जा रहा हो, तो लाइक दिट ट्रिगर्स मी कि भाई अब जो है जो रैम और प्रोसेसर इज नॉट सफिशिएंट, सो आई हैव टू अपग्रेड. If I have to upgrade, so all I have to do is like go to size, and I can I can upgrade from 4 core to 8 core, or whatever like I needed. So ये 4 cores में 8 core पर या 16 core पर जो मुझे requirement है. Okay, so
जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मशीन एक दफ़ा रीस्टार्ट होगी और नए रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो जाएंगे। इसी तरह मुझे नेटवर्किंग में यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल अवेलेबल है कि मुझे 3389 के अलावा 80443 और मे भी अगर इसके ऊपर कोई डेटाबेस इंस्टॉल है तो उस डेटाबेस की पोर्ट वगैरह ओपन करनी है तो मैं यहाँ से उन पोर्ट्स को ओपन कर सकता हूँ। सो आई थिंक अगर यहाँ कोई किसी का कंसर्न है कोई मशीन से रिलेटेड। Second part is app services, or like if you wanted to host your WordPress or WooCommerce website, or you wanted to host it your any of the open source technology application. So the idea should be services like app services. Create an app service. अच्छा, ऐप सर्विसेज फॉर एवरीथिंग। आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, आप एपीआई होस्ट करना चाहते हो, या आप एक टिपिकली एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो। सो ऐप सर्विसेज फॉर एवरीथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज। सो स्पेसिफाई डेमो सब्सक्रिप्शन। I'm choosing the same resource group. Okay. Okay. ये जो है बाय डिफॉल्ट एक आपका टेम्पररी डोमेन आपको स्पेसिफाई कर देगा azurewebsites.net। तो राइट नाउ अगर मेरे पास कोई कोड है, कोई अपना एग्जिस्टिंग कोड है, तो आई कैन सेलेक्ट द स्पेसिफाई द रन टाइम। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो सपोर्टेड रन टाइम है, लेट्स से ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट भी है, जावा भी है, नोड जेएस भी है, पाइथन है, रूबी है। अच्छा, ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज है। बट आपका कोई अपना कंटेनर है और आप कोई थर्ड पार्टी कंटेनर चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जो कंटेनर होगा वो लिनक्स हो सकता है, वो विंडोज हो सकता है। जस्ट ओके। सो जो है कंटेनर में आपके पास जो है मे बी आप कोई डॉकर हब से जो है कोई अपना कोई कंटेनर लोड करना चाहते हो, एनजीएनएस का कंट्रोल मे बी आपको अपाची नहीं रिक्वायर्ड। जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो अगर मैं कोड बेस दूं और मैं सेलेक्ट करूं PHP 7, ओके, सो बैकएंड पे जो सर्वर होगा वो होगा अपाची। बट इफ आई चूज इफ आई वांटेड टू होस्ट इट ऑन विद PHP 7.4 on nginx server, so I need to go for the docker container, and then I can specify or I can bring my own container on Microsoft Azure. So अब right now अभी मैं keep it simple approach पर जाता हूँ और एक PHP 7.4 पर लेकर Linux environment, और लेट्स सी ये जो है मैं दुबई में ही होस्ट करता हूँ। ओके। जब आप यहाँ पर भी आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या एसक्यू साइज रिक्वायर्ड है। एसक्यू इज लाइक कितनी रैम और कितना प्रोसेसर इस इंस्टेंस को अवेलेबल होगा। इट कुड बी लाइक फ्लेक्सिबल, और आप इसको रन टाइम पे स्केलेबल भी बना सकते हो कि व्हेन ऐप सर्विस के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि लेट्स से ये इफ यू गेटिंग द मोर एंड मोर ट्रैफिक, तो आप जो है यहाँ से इसके एडिशनल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। बट राइट नाउ आई एम गोइंग विद द डिफॉल्ट वन। नेक्स्ट। ओके। माइक्रोसॉफ्ट एज ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड एप्लीकेशन इंसाइड, ये यूजुअली ना डॉट नेट के साथ तो ये नेटिव अवेलेबल है, नेटिवली अवेलेबल है। अगर आप इसको जावा और पीएचपी वगैरह में भी यूज करना चाहते हो तो इसके साथ आप उसको इनेबल कर सकते हो। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स उसकी जो इंटीग्रेशन है, व्हाट इट डूज लाइक आपको वो माइन्यूट लेवल तक की डिटेल देता है कि अगर आपका एप्लीकेशन ऐप सर्विसेज पर रन हो रही है और किसी स्टेज के ऊपर कोई एरर्स जनरेट हो रहे हैं, कोई फेलियर्स आ रहे हैं, तो इट प्रोवाइड्स यू द कंप्लीट विजिबिलिटी अबाउट दोस फेलियर्स। कि लेट्स से कस्टमर जो है चेकआउट स्टेज पर जाता है और चेकआउट स्टेज के बाद वो एप्लीकेशन या आपकी सर्विसेज मेल फंक्शन करती है, तो कस्टमर तो आपको मेल फंक्शन रिपोर्ट कर रहा है, बट उस मेल फंक्शन के पीछे हुआ क्या था, वो एग्जैक्टली इशू क्या हुआ था ट्रिगर। So through application side, you can review those kind of errors and then create.
ओके सेम। अच्छा डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस वो यहाँ पे आपको शो करता जाएगा। इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स और आपकी सर्विसेज रेडी हो जाएगी। सो ये अगर मैं सिनेरियो को इसको रिलेट करूँ कि अगर ये आपकी एक ई कॉमर्स स्टोर है और आप ई कॉमर्स स्टोर को होस्ट करने लगे हो, तो जस्ट आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया ऐप सर्विस का, और ऐप सर्विस का इंस्टेंस जैसे ही क्रिएट होता है आपने एक डेटाबेस का भी इंस्टेंस क्रिएट किया और डेटाबेस इंस्टेंस पे अपलोड कर दिया अपने डेटाबेस को, अपने एप्लीकेशन कोड को जो है ऐप सर्विस पे होस्ट कर दिया, एंड देन योर ई कॉमर्स इज रेडी टू गो लाइव। और ज़्यादा से ज़्यादा इट टुक लाइक अराउंड लाइक 1 or 2 आवर्स, जितना जो कोड अपलोड का टाइम हो सकता है या डेटाबेस अपलोड का टाइम हो सकता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके नाउ द रिसोर्स इज नाउ रेडी, दिस ऐप सर्विस इज रेडी। इंटरफेस की सिमिलैरिटीज हैं। ओके दिस इज ब्लेड। ओके अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का ये जो अजूर का इंटरफेस में इज कॉल्ड ब्लेड। आपके डिफरेंट ब्लेड्स एक्टिव होते जाते हैं। जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, लेट मी, अच्छा बाय डिफॉल्ट उसने जिस मैंने एक जो नाम दिया था उसको, उस नाम पर उसने जो है डेमो यूआरएल मुझे टेम्पररी यूआरएल असाइन कर दिया है, और आई कैन like join my own domain, for instance SepiaSolutions.com। तो यहाँ पर कस्टम डोमेन्स का ऑप्शन अवेलेबल है एंड आई कैन असाइन माय ओन डोमेन। बट राइट नाउ मैं इस टेम्पररी डोमेन को एक्सेस करता हूँ तो ये डिफॉल्ट पेज अवेलेबल हो जाता है। ओके ऐसी डेमो, और डिफॉल्ट पेज जैसे आपको बता रहा है कि योर एप्लीकेशन इज रेडी, जस्ट यू नीड टू डिप्लॉय योर सर्विसेज और योर कोड बेस। अच्छा वो कोड बेस डिप्लॉय करने के बाद आपके पास टिपिकली एक ऑप्शन है जो एफटीपी है। डिप्लॉयमेंट में सेंटर में जाके आप जो है एफटीपी के क्रेडेंशियल्स चूज करके और अपने कोड को थ्रू एफटीपी अपलोड कर सकते हो। बट आइडियली और द बेटर ऑप्शन शुड बी कि आप उसको डेवऑप्स इंटीग्रेट कर दो। ओके एफटीपी के क्रेडेंशियल्स उठा के आपने अपने कोड को थ्रू एफटीपी अपलोड कर दिया, और यही पैटर्न अप्लाई होगा। अब मेरी एप्लीकेशन सर्विसेज रेडी हैं, रेडी टू पब्लिश है, और मुझे डेटाबेस भी रिक्वायर्ड है। तो लेट्स से अगर मुझे इन माय केस लेट्स से मुझे, अच्छा यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी सेम एग्जैक्टली यही मॉनिटरिंग है। इस मॉनिटरिंग में मुझे 500 एरर्स, 500 इंटरनल सर्वर एरर्स कहलाते हैं जो आपके एप्लीकेशन के साथ जब कोई एप्लीकेशन मेल फंक्शन करती है तो 500 एरर जनरेट होता है। तो आप देख सकते हो कि कितने 500 एरर्स आ रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड रिसीव हो रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जिसकी बेसिस पे आप गेज कर सकते हो कि आपका यूजर किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था। आपकी लेट्स से वेबसाइट 2 or 3 सेकंड्स के अंदर लोड नहीं हो रही, इट टेक्स लाइक 5-10 सेकंड्स। आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। अच्छा ये मैट्रिक्स जो आपको अब उसके लॉग्स भी दिखाता है, आप उसके लॉग्स को रिव्यू करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली कॉजिंग दिस डिले। Okay. Now, ideally, my application is ready, which is the PHP पर है. Second option should be like ideally could be a MySQL database. So मैं इसी तरह एक MySQL का database भी create करना चाहता हूँ, तो मैं एक create MySQL database. Okay, right now choosing the single server. Flexible server has the flexibility, is like a scalable model, but मैं अभी एक simple model choose कर रहा हूँ single server. विजिट देख लें वो सिमिलर है, मतलब सर्विस कोई भी हो बट विजिट और क्रिएट करने का जो मैकेनिज्म है वो समवॉट सेम है, बस वो मुझे पैरामीटर जो है अलग से अपने चूज करने पड़ते हैं। सेम यहाँ पर भी। अच्छा जब मेरी एप्लीकेशन जो है होस्टेड है यूएई नॉट में, तो आइडियली इसे यूएई नॉट में ही डेटाबेस को भी होस्ट करना चाहिए मुझे, ताकि मुझे लोएस्ट लेटेंसी मिले। देन मैं उसका वर्जन चूज कर सकता हूँ 5.7 और 8 वर्जन। यहाँ पर भी मुझे स्पेसिफाई करना होगा इंस्टेंस का साइज जो मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे अगर 4 कोर की ज़रूरत नहीं है तो मैं 2 कोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हैव टू चूज द, मैं वही सेम मशीन वाला ही यूजर नेम पासवर्ड चूज। ओके, और अगेन
यहाँ पे भी जब मुझे वेरिफिकेशन कर ली उसने, मुझे रिव्यू करवा दिया, जब सही मैंने क्रिएट किया तो वो वैलिडेट करेगा सारे पैरामीटर्स को और विद इन अ मिनट और टू ये भी रिसोर्स रेडी हो जाएगा। सो अगर आप देखें तो मैंने शायद हार्डली 10 मिनट्स के अंदर एक वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर ली। वर्चुअल मशीन मेरा एक पर्पज सर्व कर रही है कि मशीन के अंदर जो है मुझे खुद ही मैनेजमेंट करनी होगी। सेकंड स्टेज पर मैंने ऐप सर्विस क्रिएट कर ली जो मेरी किसी भी मॉडर्न एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए काफ़ी है, और साथ में मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। मैं भी वो जो मशीन है मैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस पे यूज करूँ, मैं अपनी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर रखूँ, सारी की सारी अपने सिस्टम के ऊपर या अपना लैपटॉप पर ना रखूँ, और जो है ऑल इन ऑल जो मेरी जो डेवलपमेंट हो रही है वर्चुअल मशीन के ऊपर हो रही है, ताकि मेरी कोड की सिक्योरिटी भी वहाँ पे मिल रही है, और मैं अगर किसी भी मशीन से ज्वाइन करके काम करना चाहता हूँ। और ऐप सर्विस के ऊपर मैंने अपना कोड होस्ट कर दिया और MySQL डेटाबेस एज एन सर्विस पर। अच्छा पीछे देखिए, मुझे सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एज एन सर्विस ये पैस मॉडल है। ओके, पैस मॉडल में मुझे पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में ये भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई थिंक वी हैव कवर्ड लाइक अज्योर इन एक्शन। अज्योर डेवऑप्स पोर्टल में सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है अज्योर का डेवऑप्स पोर्टल, क्योंकि इट्स लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अज्योर डेवऑप्स पोर्टल के थ्रू आप जो है अपने यहाँ पर है बोर्ड्स में आप अपने सारे वर्क आइटम्स और अपनी यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हो कि आपने कोई फीचर सेट क्रिएट करना है, कोई फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में जो डिजाइन करना है सारे वो आपने अपने बोर्ड्स में मेंटेन कर लिया। रैपोज जो है इस अबाउट लाइक जहाँ पे आपका सारा कोड बेस होस्ट होगा। आप जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई लैंग्वेज के थ्रू आप कोई कोडिंग कर रहे होगे, मे बी नॉट जेएस, मे बी रिएक्ट, मे बी एंगुलर, मे बी डॉट नेट। ओके, आई एम डॉट नेट गाय तो मैं डॉट नेट चूज करूंगा, और यहाँ से मुझे अपना कोड का सारा रिव्यू कर सकता हूँ मैं। अच्छा, जिस तरह मैंने एक सैंपल के लिए कलेक्ट किया बता, ये मेरा कोड यहाँ पर कनेक्टेड है, और मैं यहाँ पे कोड में कुछ भी लिखता हूँ, और लेट्स से मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया टेस्ट मेथड, मैंने एक और मेथड क्रिएट कर लिया क्विकली। ओके, और जब मैंने काम कर रहा हूँ तो ये मुझे रेड चेक मार्क देगा। रेड चेक मार्क इट मींस लाइक मैं इस कोड के ऊपर चेक इन मैंने किया हुआ है और चेक आउट फॉर एडिट किया हुआ है। अच्छा, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, लाइक वन इज लाइक गेट एंड अनदर वन इज टीएफएस। गेट के अंदर पुश एंड पुल का वर्ड यूज होता है, जब आप अपने कोड को काम करते हो वो पुश एंड पुल के कॉन्सेप्ट होता है। ओके, और देन मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आप ब्रांचेस बनाते हो, मेन ब्रांच होती है, ब्रांच के फीचर्स की ब्रांच होती है, और जो आप ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, डेवऑप्स जो माइक्रोसॉफ्ट का BSTS भी है, पर इसके अंदर जो एक डिफरेंस है वो चेक इन और चेकआउट का वर्ड यूज होता है। यूजुअली अगर मुझे इस फाइल पर काम करना है तो इस पर कुछ कोडिंग करनी है तो आई यूजुअली चूज चेकआउट फॉर एडिट एंड देन मैं इस पर काम शुरू करूंगा, या जैसे मैं काम करना शुरू करूंगा वो ऑटोमेटिकली चेकआउट फॉर एडिट कर देगा। आई एम डन विद माई वर्क। ओके, मैंने जो काम करना था, मैंने एक फंक्शन लिखना था, मैंने एक फंक्शन लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ तो मैंने चेक इन किया। ओके, और मैंने उसका कमेंट्स मुझे ऐड जो करना है मैंने कर दिए और चेक इन कर दिया। जैसे ही चेक इन किया, ये मेरा कोड बेस जो है वो सबमिट हो गया सर्वर के ऊपर, विच आई कैन रिव्यू। अच्छा, मैं अपने इस विजुअल स्टूडियोज पे से भी देख सकता हूँ, बट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट ऑन द फ्रॉम द पोर्टल। यहाँ पे जब मैं चेंज स्टेट पे क्लिक करूंगा तो चेंज स्टेट पे मुझे शो करेगा। देखे, मैंने जो सुबह में चेक इन किया था फॉर जस्ट वेरिफिकेशन, और एक ये। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने कोड का एडिशन किया था, ओके, तो ये मुझे चेंज स्टेट में मुझे आइडेंटिफाई कर देगा कि आई जस्ट uploaded or changes, I have applied the changes on the one controller or one file which is home controller, और वहां पे मैंने इस कोड को सिर्फ ऐड किया सेशन डेमो। इवन आई कैन कंपेयर दिस कोड विद द प्रीवियस वन। ओके, बट अभी क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट यहाँ से यू कैन मैनेज ऑल द, यहाँ से आप अपनी सारी फाइल्स मैनेज कर सकते हो ये ब्राउजर के थ्रू, और आप अपने किसी भी आईडी के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो, ईदर विजुअल स्टूडियो, VS कोड, और जो भी आपका आईडी ऑफ योर चॉइस, उसको आप कनेक्ट करके अपने कोड बेस को मेंटेन कर सकते हो। और आई एनकरेज कि जितने भी जो डेवलपर्स हैं यहाँ पर वो इसी को यूज करते हुए अपने कोड की मैनेजमेंट करें। सो आई थिंक that's enough for Azure in action का जो part है। We have to show something like how you manage Azure services through Azure. And next step is like what the offer we have for startups. Okay,
So let's discuss about the offering we have for startups. So as a Microsoft partner, we have created 2 offers for as part of our campaign जो हम जो है जून तक run कर रहे हैं, where we are working with NIC Pakistan and NIC Islamabad especially. So usme we are focusing on 2 kind of startups. One is early stage startup and another one is like on the growth stage. Those are like on early stage जिनका भी idea पर like maybe वो भी development stage पर है और अभी तक उन्होंने कहीं host नहीं किया उस idea को उन services को. So we are offering them the complimentary services और उसमें जो है we are providing the $250 marketing fund. That fund can be utilized on like with 2 contexts. One is like you upload or you publish your ID on Azure और वो services Azure के ऊपर host कर दो through us. Once it's done, and we will compensate for your marketing activities. For instance, आप Facebook के ऊपर LinkedIn के ऊपर advertisement करते हो अपनी services की, so we will compensate $250 through marketing development fund. Actually, we will share all these details through email as well. And then second one is for growth stage startup. This is ideally for those जिनका idea already published है और एक वो idea जो है maybe किसी existing और किसी other vendor के पास है, maybe AWS पर hosted है या shared hosting पर hosted है. So we are offering them this one-on-one demo. We will help them for the assessment part कि हम आप जो current service जो भी use कर रहे हो और वहाँ पे जो भी challenges हैं, so और डेमो के अंदर और असेसमेंट के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दो चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं थ्रू अज्योर और उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. एंड एज वेल एज लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द $500 जो मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड. सो दीज 2 offers for 2 kind of startups. So if you are a like early stage startup, this is for you, and if you are like at growth stage, so this is for you. Just you have to migrate your service to Azure. So I think I've covered pretty much everything जो भी plan था. So the next step is like schedule a demo with us or for all the details और for all the services और कोई आपके scenarios हैं और आप अपनी service की validation करना चाहते हो और आपने कहीं भी अपनी services को host किया हुआ है तो आप validate करना चाहते हो कि Azure पे वो कैसे run होगी, मेरा architecture supported है Azure के ऊपर नहीं है, cost क्या होगी monthly, किस तरह मैं सर्व कर सकता हूँ ग्लोबल ऑडियंस को या पाकिस्तानी ऑडियंस को. So now the like floor is open for questions. So if there is, I see like few questions. Can I ask? Can I use more than one? Yeah, you can. In Magento 2 available is on the platform. Okay, the question is from Rahil. Okay, Rahil, you can host it Magento services or Magento platform, not as a SaaS platform. It's called SaaS is something जो Magento खुद itself ही देगा ना, जैसे Microsoft अपनी SaaS services दे रहा है Office 365 के थ्रू ना, Office 365 is Microsoft SaaS services. तो Magento 2.0 की अगर आप बात करो तो SaaS मॉडल नहीं होगा, PaaS मॉडल के ऊपर मौजूद होगा. ओके, सो आप करोगे क्या कि ऐप सर्विसेज के ऊपर आप अपना Magento का कोड बेस होस्ट करोगे और Magento का जो डेटाबेस वो MySQL के थ्रू होता है. तो जो मैंने अभी जो 2 सर्विसेज क्रिएट की ऐप सर्विसेज पर अपना Magento का कोड बेस रख दिया और MySQL डेटाबेस एज एन सर्विस के ऊपर रख दिया. तो दीज आर 2 प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस सर्विसेज. तो ये आपको रिक्वायर्ड होगी. ऑब्वियसली इसके साथ आपको सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजर ऑल अदर स्टफ भी रिक्वायर्ड होगा, बट मिनिमम आपको जो रिक्वायर्ड है एक ऐप सर्विस रिक्वायर्ड है और एक MySQL एज एन सर्विस रिक्वायर्ड है. सो यस, आपका आंसर मैं यही कहूंगा कि यू कैन ऑल्सो होस्ट इट Magento विद एज अ PaaS मॉडल. ओके, और अगर इस और फर्दर क्लैरिटी रिक्वायर्ड है यू कैन लाइक माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो. Can I use more than word virtual? Yes, you can. Like आपकी कोई कैद नहीं है, जितनी virtual machine आपने create करनी है 10, 20, 50. Third question is from Rahil. Is there an option to set it up handle spikes to a certain extent itself without manually updating? Yes, that's possible. अच्छा, ये जो है it depends on the architecture you are like implementing. जैसे मैंने virtual machine पे किया तो virtual machine में तो आप मैनुअल पर जाओगे. वर्चुअल मशीन में लेट्स अगर आप स्पाइक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो आपने वर्चुअल मशीन के साइज को अपग्रेड करना होगा. जैसे आपकी 4 कोर की मैंने एक मशीन ली थी, 4 कोर से आप चलेगा 8 कोर की तरफ, तो ऑब्वियसली मशीन एक दफ़ा रीस्टार्ट होगी या रीबूट होगी.
तो ऑब्वियसली एक आपकी ऑडियंस को, आपकी कस्टमर एक ब्लॉक और एक इंटरप्शन सर्विस पे एक्सपेक्ट कर सकता है. बट अगर इफ यू गोइंग विद द पास मॉडल, जो मैंने सेकंड इंप्लीमेंटेशन की थी अभी जो डेमो में, कि ऐप सर्विस और माई स्क्वेयर, वहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं है. सो उसमें आप मैनुअली भी कर सकते हो और उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस राइट नाउ यू आर रनिंग ऑन अ वन इंस्टेंस. आप कहते हो वो वन इंस्टेंस में 500 पैरेलल कस्टमर्स को तो अकोमोडेट करता, बट मोर देन 500 अकोमोडेट नहीं करता. तो यू कैन लाइक क्रिएट एन ट्रिगर कि जैसे ही ऑडियंस या जैसे ही रैम और प्रोसेसर जो है 80% पे पहुंचे, सो इट शुड अपग्रेड फ्रॉम 4 कोर टू 8 कोर, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. या वन सॉरी, इसमें जो ऐप सर्विस के अंदर इंस्टेंस होते हैं, सो अनदर इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड. अब एक इंस्टेंस से ज्यादा 2 इंस्टेंस क्रिएट हो, थर्ड इंस्टेंस क्रिएट हो, तो आप जितने इंस्टेंस चाहो वो आप उसका भी मैक्सिमम लिमिट भी लगा सकते हो कि इट शुड डोंट गो बियॉन्ड या थ्रेशोल्ड एस्टैब्लिश कर सकते हो मोर देन 5 इंस्टेंसेस. एनी अदर क्वेश्चन or are we done? Haseeb, we have a few questions on Facebook, so I'll just read them out to you and you can answer live. Sure. Why these cloud services are coming to Pakistan? Can we deploy workloads to neighboring countries and still function as is? Yeah, actually it's not coming to Pakistan. Pakistan is in a way कि आप ये कह सकते हैं कि Microsoft is there from quite some time. तो Microsoft तो बहुत अरसे से मौजूद है, बट Microsoft NIC के साथ एडवर्टाइज करने जा रहा है या अपने आप को इनेबल कर रहा है ताकि Microsoft Azure भी यूटिलाइज होना शुरू हो पाकिस्तान के अंदर. But there's no restriction. You can host the services on anywhere. As I specified कि अगर आप पाकिस्तान से जो नियरेस्ट डेटा सेंटर इज UAE नॉर्थ, तो आप UAE नॉर्थ में ना क्रिएट करो. आप अगर आपकी ऑडियंस यूरोप साइड पर है तो आप यूरोप का डेटा सेंटर अपनी सर्विसेज पर होस्ट करो. There's another question from Faraz. Does Azure function trigger any event? Yes. But अगर इसका मुझे context अगर फराज अगर आप if you're here you can open the mic and you can like briefly explain this question. Trigger, yes, different trigger, you can create your own trigger or triggers यानी कि thresholds हैं, triggers and triggers के thresholds हैं. For instance मैंने एक example दी थी कि एक trigger है RAM is like meeting like reaching to 80%, so एक और instance create हो जाए, तो that kind of triggers are available. और आप अपनी मर्जी से खुद भी triggers create कर सकते हो. और अगर आप function से specific बात करें तो that's also possible. Faraz, if you have any, if you want to elaborate on this question, you can unmute your mic and ask away. Thank you for that. Haseeb, you got it right. Absolutely, that was my question. Thank you. Anything else? Zabardast. Do we have Saran with us? Saran, are you there? Yes, I'm here. Yes. Over to you then. All right. Wonderful. Thank you so much, everyone who participated in this workshop. Thank you, Haseeb, most of all, for taking the time out to guide the startups. This was a very comprehensive, and what I liked about this was that it was a very hands-on training, right? So you got to see how you work your way around the Microsoft Azure platform, and this was quite helpful. So we'll have more sessions on this as well. And we will keep requesting Haseeb to take time out for our startups. Very kind of him to do that with us or sort of take his time out today and brief everyone. Everyone, thank you so much once again for attending this session, taking the time out, all the participants. Before we sign off, Zunaira, are we taking a screenshot? No, because most of the audience has joined as attendees only, so we won't be. Okay. All right, wonderful. I guess we're okay to wrap this up. Guys, all the participants who are still here in the session will send you a feedback form. Make sure that you fill that up so that can help us stay at par with the market requirements, and your feedback will be very valuable. So yeah, I believe that's the end of the session. Thank you all once again for joining. Thank you, Haseeb, and we will see you inshallah very soon. Inshallah. Thank you. All right, thanks. And hopefully guys. like the next session gonna be like in person. Yeah, in person, yes. So the next session we're hoping to have in person, inshallah.
Okay, thank you. Thanks, guys. Thanks. Okay, Bye-bye. love us.